Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of this chapter, that is the types of RNA as well as the conjugated molecules. So let's move to the whiteboard. So RNA, that is ribonucleic acid. We were discussing in the previous lecture its types. Types of RNA. So there are three major types of RNA. In the previous lecture, we have discussed its first one, the first type, that was messenger RNA. Clear? Or also abbreviated as mRNA. Okay? बस एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बस लिख देता हूँ यहाँ पे कि टोटल कितना मौजूद है इस सेल में, 3 to 4% of total RNA present in a cell. ये वाली percentage composition आपने याद रखनी है. It is important for MCQs. Now the second one is transfer RNA, abbreviated as tRNA. Clear? tRNA, ट्रांसफर RNA. इसके नाम पे गौर करें, वहीं पे इसका आंसर भी मिल जाएगा. सो द ट्रांसफर RNA, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, this type of RNA transfers the activated amino acids from cell within the cell to the site where the messenger RNA is being decoded. तो मैसेंजर RNA के ऊपर एक कोड मौजूद है, तीन न्यूक्लियोटाइड का, हर 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट कोड से एक अमीनो एसिड बन रहा है. तो जो भी उसके पास सीक्वेंस होगा मैसेंजर RNA के पास, ये उसी अमीनो एसिड को उठाकर सेल से लेकर आएगा और उसके ऊपर अटैच करता चला जाएगा. जैसे जैसे वो अमीनो एसिड्स एक्सपोज होते चले जाएंगे, उनका कोड एक्सपोज होता चला जाएगा. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, एज there are 20 amino acids involved in protein formation, so there are 20 different types of transfer RNA in the cell, or transfer the specific amino acid to the site of translation. जहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही है वहाँ पर इनको पहुँचाएगा. हर एक स्पेसिफिक है. 20 मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड्स हैं
और हर अमीनो एसिड के लिए एक डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मुख्तस किया गया है. Its length is about 75 to 90 nucleotides. Clear? Or dear students, in a cell, the transfer RNA makes 10 to 20% of total RNA in cell. Clear? जितना भी सेल के अंदर RNA है 3 to 4% उसमें मैसेंजर RNA था और 10 to 20% उसमें टोटल ट्रांसफर RNA. क्लियर? और इसकी शेप किस तरह से होती है? It looks like this. Inshallah, in second year, you will learn in details like this. So this is the structure of transfer RNA. This is transfer RNA. Here. Now the third type is the ribosomal RNA or rRNA. Clear? So dear students, इसके नाम पे गौर करें जरा. Ribosomal means in chapter number 4 आप पढ़ेंगे ribosomes और उसकी composition. So ribosomes जो होते हैं they are made up of an equal amount of RNA and equal amount of protein. Means 50% RNA, 50% protein. तो जो 50% RNA उन राइबोसोम में मौजूद है, that is the ribosomal RNA. Clear? It is the major RNA in cell and may make up to 80% of total cellular RNA. Means कि सेल के अंदर जितना भी RNA है उसमें approximately 80% जो है वो राइबोसोमल RNA होता है, 10 to 20% ट्रांसफर RNA और 3 to 4% मैसेंजर RNA होगा. Clear? And also in ribosomes it makes up to 40 to 50% of ribosomal protein. Clear? तो इसका स्ट्रक्चरल उसके राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये उसका इंटेग्रल पार्ट है, उसका हिस्सा है. Clear? And on the surface of ribosomes, messenger RNA and transfer RNA interact to form protein by translation. And inshallah in second year chapter number 20 उसमें details पढ़ेंगे, replication, transcription, translation,
how proteins are formed in the cell. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटीन बनवाने के लिए तीनों RNA टाइप्स चाहिए, इनमें अगर एक भी मिसिंग है तो प्रोटीन यूजुअली नहीं बनेगी। क्लियर? क्योंकि मैसेंजर RNA कोड लेके आ रहा है, अगर ये कोड नहीं लेके आएगा तो कैसे ट्रांसलेशन होगी? ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो ट्रांसलेशन कैसे होगी? अगर ट्रांसफर RNA नहीं है तो वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कौन करेगा? और अगर राइबोसोमल RNA नहीं है तो राइबोसोम नहीं है, तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लियर? सो इट्स फंक्शन इज टू synthesize the proteins. Its function is to synthesize proteins. Clear? By the process of translation. So these are the three types of RNA. So the last topic of this chapter, that is conjugated molecules. Very important regarding short questions, and it might be asked as a long question, क्योंकि आजकल छोटे जो हैं वो long questions उनका trend भी है board. So two different molecules belonging to two different categories combined together to form conjugated molecules. Clear? That might be considered as the definition of what are conjugated molecules. So two different molecules, दो मुख्तलिफ molecules, दो different categories से belong कर रहे हैं, वो they join together to form conjugated molecules by linking or by forming chemical bonds. Clear? First of all, glycoproteins. So this is a conjugated molecule. It is formed when the carbohydrate bonds or combines with protein molecule, proteins. They form glycoprotein. Clear? And what is its function? What is the function of glycoproteins? So dear students, remember one thing. That most of cellular secretions, mean जो cells हैं जो secretions बनाते हैं अपनी, they are glycoprotein in nature. Clear? Means they are glycoproteins. And number two, the glycoproteins are the integral part of plasma membrane. In chapter number 4, the topic of cell membrane or plasma membrane, inshallah we will discuss. So ये दो important functions. Number one, cellular secretions, and number two, the structural role, that is integral part. ये इसका structural role है, ठीक है? Number two,
the second conjugated molecule. That is the first one. Now the second one is glycolipids. So when carbohydrates combine with lipids, they form glycolipids, or we can simply say that carbohydrate plus a lipid is equal to glycolipid. Clear? And what is its function? So the function is the glycolipids along with the glycoproteins are integral structural part of plasma membranes. Clear? आपको याद होगा, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा होगा क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें लिपिड्स के साथ वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं. So the third category is the lipoproteins. So the lipoproteins, very easy. It means lipids plus proteins, they will form lipoproteins. And dear students, what is its function? As far as its function is concerned, the lipoproteins are the integral structural part of the cell membranes. In the cell, सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यानी जो ऑर्गेनल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और बाकी सबके भी, ठीक है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं. एंड नंबर 4, द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, the conjugated molecules. So dear students, it is the nucleic acid, having strong affinity for basic proteins. Clear? So इसी वजह से the nucleic acid plus histone proteins, it will form nucleohistone, which is also called as nucleoprotein. So this one has got function. Its function is the nucleoproteins not only play structural as well as functional role.
and they're also involved in gene regulation. Yeah, this is what the nucleoproteins. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।